अस्सलामुअलैकुम यू गाइस, दिस इज़ शेफ़ सबा आफ्ताब। हम लोग आज इनिशिएट करने लगे हैं रमज़ान की सीरीज़ विद लजीज़ क्यूजीन। दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट शो फॉर दिस सीज़न। हम लोग सहरी से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो just generally when we're prepping meal for Ramadan, we kind of depends. If you're prepping a meal for sehri, you would want to avoid spices and you would want to keep it simple and plain and rather energetic than something absolutely over the top. When it comes to iftari, however, we have had spent a whole day of not eating and drinking anything, and we are really craving for some delicious, good munchies. So that normally we should be helping our elders or whoever is prepping the food in the kitchen, be it your sister, mother, brother. कभी कभार अब्बाओं का भी दिल चाह रहा होता है किचन में काम कराने के लिए, तो जो भी काम करा रहा है आप उनके साथ हेल्प करें एंड मेक योर रमदान डिलिशियस and amazing the way it is. Alright, so something that I really like about Ramadan, since it's already starting up, is the fact कि हम जब regular days में हम लोग वैसे शायद खाने की टेबल पर पूरी फैमिली साथ नहीं होती है, but in Ramadan everybody is together on Sehri and then on Iftar. So I think I really like this aspect of Ramadan and I feel कि ये वाली चीज़ ना शायद it should last throughout the year too. But that doesn't happen, right? So Ramadan is here with us for 30 days. इसमें अच्छे भरपूर इबादत करें और इस महीने को बहुत अच्छी तरह spend करें अपनी family के साथ with all of its blessings and everything. और फिर आखिर में ईद भी होती है। ईद की अलग एक्साइटमेंट होती है। जब आपने बहुत अच्छे से रोज़े रखे होते हैं तभी एक्चुअली आपको ईद की असल खुशी भी होती है उसको सेलिब्रेट करने की, उसके लिए चीज़ें प्रेप करने की। बच्चों के साथ ईद का मज़ा ही और होता है। ईद पे बच्चों की एक्साइटमेंट इज़ विद ईदी एंड स्टफ। एनीवेज, सो आई एम गोइंग टू बी मेकिंग समथिंग टुडे दैट इज़ a little on the spicier edge. So I wouldn't recommend especially to make this on सहरी while you're having सहरी, but क्योंकि देखें सहरी के टाइम पे हम लोग नॉर्मली सिंपल फूड को रखते हैं अपने टारगेट में, क्योंकि होता ये है कि आपको पूरा दिन उसी खाने के साथ रहना होता है. सो इट्स बेटर कि अगर वो खाना स्पाइसियर नहीं हो. इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर वो स्पाइसी होगा फिर यू हैव एसिडिटी गोइंग ऑन, फिर पूरा दिन उस तरह से अगर आपको गुजारना है और एक्चुअली आप उसको क्योर भी नहीं कर सकते. लेट्स से एक एसिडिटी हो गई है एंड यू कांट रियली टेक एनी मेडिकेशंस फॉर इट टू. सो बजाय उस अजियत में रहने के आप ईजी मील से शुरू करें. सो ईजी लाइट ईटिंग करें. आज हम बना रहे हैं पेने अरबियाता. ओके, सो पेने इज़ द काइंड ऑफ पास्ता दैट वी आर मेकिंग. जो स्लांटी लुकिंग पास्ताज होते हैं वो दोज आर पेने. पास्ताज के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से एक पेने है. और इसके अलावा अरबियाता itself, since it's Italian cuisine, and Italian cuisine में this one particularly is the spicy kind. So Arabiata itself means angry. So angry, gussa, right? So what happens is that this sauce got its name with the fact that it's super hot, super fiery, super spicy, hence the name Peny Arabiata. Alright, so I'm going to be making a marinara sauce for that, and then I have cooked pasta, yani boiled pasta. Another tip, by the way, for your pasta would be to keep it al dente. Al dente is basically leaving a bite behind when you're cooking your pasta. Let's say when you're doing your pasta for any kind of pasta. So when you're boiling pasta with salt and water, you need to leave a bite behind. अगर आपने bite behind, I can give you an example of this with the fact कि if you do biryani rice in your house, right? So एक नहीं छोड़ के, या we leave it a little lesser done than entirely done. We don't want mushy rice platter. We want जिसको हम खरा चावल कहते हैं ना, वो वाली चीज़. So पास्ता में भी इस तरह वाला ही एक लॉ फॉलो होता है जिसके अंदर आपको उसके अंदर एक बाइट छोड़ना होगा. That is kind of important for that particular experience to your pasta. So what you want to do is टेस्ट करते रहें, यानी चेक करते रहें while you are boiling your pastas. एंड जैसे यू फील कि अब ये सॉफ्ट होने से बहुत पहले रुकना है, बिकॉज देयर इज़ नो गोइंग बैक. वंस योर पास्ता इज सॉफ्ट यू कांट टेक दैट बैक.
So what you want to do is keep checking on it, and उसके अंदर एक छोटा सा बीच में white line रह जाएगी once you're testing your pastas. So as to tell कि this pasta, how much is it done or is it overdone, you need to find that out while it's going on. So we are starting off with the marinara sauce. For marinara sauce, we have tomatoes, basils, and garlics here. Then I have dried oregano, red chili, salt, and black pepper. What you can do is, since we have a desi palate too, so we also love spices, right? We love spices. We're a nation that love, not just spices, we love flavor, okay? So we're a nation of people that actually enjoy a lot of flavor on their palates. So what you want to do is start off with, since if you really want to follow this the Italian way, you should take olive oil to start off with. But if you do not have olive oil, that's just fine. You can start off with the regular oil too. All right, so I am going to, however, shift my pan here. I left the pan on and add a little bit of oil to it. So again, this is on you. If you're strictly following Italian cuisine and if you're strictly, you want to do it the authentic way, you should go with olive oil. But if you're not, and if it's not available, that's just fine. You can totally go ahead with the regular vegetable oil that is available in your house. So I'm going to start off with like a couple of tablespoons of oil, not too much. Let this heat up a bit. This particular sauce itself is marinara sauce, is very easy to put together. So you really don't need a lot of chopping to be done in this recipe. You can put like, half-done tomatoes and stuff. So when the season for tomato is already off, so they're ending. So when we store up tomatoes, I normally freeze my tomatoes. So what I do is, once I bring them out of the freezer, so hota kya hai ki the skin will actually fall off the flesh. So I would just, maybe chop them in half and throw them inside my marinara sauce and then just hand blend it and it's done. Because अगर आपको actually blend करना ही है, so you don't have to go through the process of cutting it entirely. All right, I am going to introduce my tomatoes here. However, let's start with garlic. Another tip for the garlic. So I do have garlic cloves here, right? Garlic cloves, whole garlic cloves. You can also take ginger and garlic ka paste. Again, if you're not following it authentically, you can switch it up with the paste too, because convenience is the key. So I normally would want my viewers to be following a good convenient recipe. अच्छा जी, इसके अंदर I added my garlics that have actually turned brown, nicely done. This basically right now is garlic infused oil. I'm trying to flip this one, but that's it. All right, so अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं tomatoes. Give them a quick toss. I did lower my flame because garlic बहुत तेज़ी से brown हो रहे थे. So yeah. आपने इसके अंदर basil leaves add करने हैं. I'm just gonna leave a few pretty ones behind for garnishings later on, and add the rest. And oh, basils are amazing. I love basils. इसके बाद इसके अंदर हस्बे ज़ायका सीजनिंग्स ऐड करके और फिर इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके हम सॉस रेडी कर लेंगे, ठीक है? ओके. Alright, meanwhile I go and prep this sauce. The last step remaining here is adding the seasonings to it and then give it a thorough blend, okay? So वो करते हैं. आप लोग please keep watching Lazeez Cuisine on Iqra TV.
right, you guys, we're back. So what I said was I'm going to add seasonings and then blend it all together. However, decided not to. I did add a little bit of seasonings, but I'm going to add in front of you too because, well, I'd like you to see this because this recipe itself, it comes together in like 20 minutes. 20 minutes is nothing really. So you need to see the process through. Okay, so in the seasonings, I'm going to add, I would say pinch of salt or more. Basically, it's on your taste, right? कि आपको कितना पसंद है, सही है? तो कम से start करते हैं हमेशा because this is mostly cooking. Cooking में what you do is you can taste as you go. So you really don't need to add all the spices together at once. You can take your time, add it, and even for the beginners, you know, you can just taste it through and then add more if you want. ठीक है? So since ये बहुत easy recipe है, it will come together in 20 minutes. It's a vegetarian dish. Wow. So people who do not like meat and would like to consume it otherwise can totally go ahead and make this easy yet delicious recipe. However, you can tone down on the spices. Since मैंने आपको शुरू में बताया था कि it's what is it? Arabiata itself means angry, right? Angry, hot, fiery, spicy. So अगर आपको let's say नहीं करना है इतना spicy तो आप ना भी करें, सही है? लेकिन डिश के बारे में, उसकी ओरिजिनेशन के बारे में और उसकी जितने भी उसके अंदर फैक्टर्स प्ले इन कर रहे हैं वो जानना आपके लिए ज़रूरी है कि फिर आप उसको अपने हिसाब से स्विच अराउंड कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट, सो दिस हियर इज़ डन. आई एम जस्ट गोना गिव दिस a quick blend. If you don't have a hand blender in your house, you can go ahead and add all of this to your standing blender, jug blender, and then blend it, okay? So, okay, this is ready. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so while blending, what you can do is अगर आप चाहें, आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो आप इसको वो भी रख सकते हैं, यानी सॉस को चंकी भी रख सकते हैं अगर आपको पसंद है उस तरह. If not, then what you can do is leave this sauce, make it in a very pasty consistency. That's on you too. Alright, so in a way pot friendly भी है, ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होंगे, एक डिश में you are done, except for the boiling pasta bit, okay? So I'm now going to add this back to my pan and then add rest of the things. आप इसको fresh parsley or fresh basil and fresh parmesan grated over top of it. It's gonna be really amazing with parmesan, of course. So we're not looking for the parmesan cheese that comes in a pre-shredded, bottled up parmesan. No, not that one. The real deal, okay? So just gonna add my pasta here. Bismillahirrahmanirrahim. Pasta is ready, so this doesn't need a lot of cooking. Did I dirty my sleeves? All right, ये कर दिया है, इसको break up कर देते हैं ताकि सॉस अच्छे से हो जाए. वैसे I personally kind of like penne pasta because penne is a very nice shape of pasta because it holds in a lot of sauce. So होता क्या है कि आप पेने के अंदर जो उसके अंदर से वो टनल टाइप बना हुआ है ना, उसके अंदर सॉस आ जाता है, राइट? सो उससे आपका पास्ता इज़ फ्लेवरफुल, ओके? सो होता ये है कि आप बॉइल्ड पास्ता था, आप इसको अपनी प्लेट पे भी यानी डिश आउट करके भी और फिर ऊपर से सॉस ऐड करके भी कर सकते हैं, ऊपर से उसके चीज़ ग्रेट कर दें और बेसिल लीव्स लगा दें और यू नो ऑल ऑफ दैट. बट अगर आपने वैसे करना है कि इसको वन पॉट पास्ता करके और सब कुछ को इधर ऐड करके और उसको मिक्स करके कर लें, दैट ऑल्सो यू कैन डू. यू कैन ऐड योर चीज़ एंड क्रीम वाइल यू आर एट इट
and I did add a little bit of chicken powder to it, so because it enhances the flavors. So that's optional. आप skip कर सकते हैं if you're looking for a vegetarian alternative, so you can skip on the chicken powder. But if you do add, and if you do not mind, it's gonna add a nice flavor to it. ठीक है? Okay. नहीं तो अगर पार्मेजान चीज़ यूज़ करें तो वो ऊपर से पास्ता के अंदर चाहें आप डाल सकते हैं. आई एम अ चीज़ लवर, आई वुड डू दैट, बट इफ़ यू वांट टू कीप इट ऑथेंटिक मे बी यू वुडंट वांट टू डू दैट. यू कैन ऑलवेज ग्रेट योर चीज़ ऑन टॉप. ऑलराइट, सो दिस राइट हियर इज़ डन. ठीक है, हम इसको अच्छे से लेट द चीज़ मेल्ट. ओके, सो चूल्हा जो मेरा स्टोव है वो बंद है. ठीक है, वो बंद है, and the cheese is gonna melt itself on the residual heat from the pasta and the stove itself. So we don't look at that pool. Oh, gorgeous. Oh, this is nice. अच्छा जी, we will now dish it out. इसके अंदर इतना प्यारा चीज़ थ्रेड है. ये थ्रेड आपको, by the way, अगर आप पार्मेजान चीज़ यूज़ करेंगे, you wouldn't get this thread. Don't look for it. So the threads normally exist with mozzarella cheese, right? So if you want to use Parmesan, mozzarella is a blend cheese. Parmesan is kind of saltier, on the saltier side. So if you want to add mozzarella, totally doable. Again, I will keep stressing on the fact that if you want to follow it authentically, you really would want to do that, okay? So we are basically, mixing and matching stuff to our taste palette. And होता है ना, आप किसी का cuisine अडेप्ट करते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं however you like. So I'll just give an example of Chinese, okay? So Chinese here, everyone is making Chinese, but not all of them can claim that this is the authentic Chinese flavor or palette, right? हमने उसको अपने हिसाब से बिल्कुल alter करके और अपने taste palette के हिसाब से modify कर दिया है, which now we enjoy. I really like the thread here. ज़बरदस्त हो गया है. अच्छा जी, इसको बस प्लेट आउट कर देते हैं. आप लोग वैसे मैंने वो भी एक और टिप पहले दी थी कि अगर आप ये करें कि बॉइल्ड पास्ता को निकाल के डिश आउट करके और फिर उसके अंदर ऊपर से सॉस ऐड करें टू योर लाइकिंग. सम पीपल लाइक इट रियली सॉसी एंड क्रीमी, अदर पीपल दे डोंट. सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, तो आप ये करें कि ना ऐड करें पूरा सॉस ऑल टुगेदर एक साथ. आप बाद में भी कर सकते हैं. इसको सेट कर दें. इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी प्री कट गार्निशिंग्स यूज़ कर रहे हैं. थोड़ा सा लेट्स सोक डाउन सम वाटर ऑन दिस पेपर टॉवल. And then I have basil leaves that I saved earlier for the garnishing. ठीक है, so बेसिल लीफ की खुशबू इतनी प्यारी है होती है. आई लव बेसिल लीव्स. इसको यहाँ रखो. ताकि आई डोंट वांट टू वाटर डाउन माय प्रेजेंटेशन ओवर हियर. ठीक है, चलो जी, दिस इज़ डन. लेट्स गो टू आवर dining table and actually be finishing the episode for today. Then since we have been substituting a lot of steps and things in this recipe anyways, you can opt for mozzarella cheese too, because it's good. I like mozzarella cheese, it's nice. Alright you guys, we made Peny Arabiata today, an Italian cuisine. This was a hot fiery sauce and you can tone down the heat as per your liking. You should, if you want, you can serve it with Parmesan cheese, fresh basil and parsley. And if you want, you can serve sauce separately with your
pasta. You can just plate out your pasta and sauce over top. And I hope you enjoyed today's episode. I am going to see you with another episode at Lazeez Cuisine. Keep watching ikra.tv and do not forget to give us your feedback. Take care. Allah Hafiz.